Okay, so let's start with question number 4. When benzene undergoes nitration, a nitro group is substituted to a carbon atom. State the shape, that is the geometry around the substituted carbon atom. Okay, तो अगर आप रिकॉल करें, सो डेट इज अ बेंजीन रिंग. ठीक है. और अगर इस बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप आके लग रहा है तो NO2 पॉजिटिव होता है. बेंजीन रिंग इस पे अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में एक इंटरमीडिएट स्टेज फॉर्म होती है. फॉर एग्जांपल, इस कार्बन पे आके ये NO2 लगा है और इस कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन एडेड है. तो ये इंटरमीडिएट के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन का, एंड वी गेट अ नाइट्रोबेंजीन. ठीक है ना. अब ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आपसे क्या, स्टेट द शेप and geometry around the substituted carbon atom. So if you look at the substituted carbon atom, this is this carbon atom. ठीक है. So in the benzene molecule, here we have a benzene molecule. तो इसमें देखें, इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे एक पाई बॉन्ड है और दो डबल बॉन्ड और दो सॉरी सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इट्स इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लानर. बिकॉज अगर हम इस कार्बन की अभी बात करें तो इस कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम कार्बन इन द इंटरमीडिएट ओवर हेयर, तो यहाँ पे आपको फोर सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं. यहाँ पे हमने डिसाइड किया था क्या है, कि बेसिकली थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वन पाई बॉन्ड है. यहाँ पे सारे फोर सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इधर अगेन थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वन पाई बॉन्ड है. तो अगर कार्बन के फोर सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसके इंटरमीडिएट में, तो इस इंटरमीडिएट में उसकी इस कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. ठीक है. एंड अगेन थ्री सिग्मा बॉन्ड और वन पाई बॉन्ड हो गए इनिशियल स्टेज की तरह. तो जो नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बनी है उसमें भी ज्योमेट्री क्या होगी? इट्स अ ट्राइगोनल प्लानर एज द बेंजीन मॉलिक्यूल. जी. इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? अगर किसी को इसमें कोई डाउट है, ज्योमेट्री में कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क. Yes, is it clear? Okay. जी सर। Next part. Naphthalene C10H8 is an arene hydrocarbon. Why it's an arene? Because it contains a benzene ring. So any compound containing a benzene ring is considered as arene. When naphthalene undergoes nitration, a mixture of two organic products compounds is formed. Each compound contains one nitro group. Okay. Suggest the structure of these compounds. Okay. So, देखें, you have to look for the possibilities. If you see, there are two benzene rings which are bonded to each other. So if I start giving a numbering, so I can assign a number one to this carbon and a number two to this carbon. ये बात सबको समझ में आ रही है? Or I can do the opposite way. I can assign this a carbon one and this a carbon two. ये बात भी क्लियर है सबको? अब अगर मैं राइट हैंड वाले रिंग की नंबरिंग करूं, तो राइट हैंड वाले रिंग में that is going to be a third carbon, that is going to be a fourth, that is going to be a fifth, and that is going to be a sixth carbon. अच्छा. बट अगर आप इसी राइट हैंड रिंग में
अपोजिट नंबरिंग देखें, यानी कि अगर आपने इसको वन अज्यूम किया और इसको टू अज्यूम किया है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ थर्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ फोर्थ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फिफ्थ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सिक्स्थ। जी, सबको ये पॉइंट क्लियर है? सो इट मींस कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6 and carbon number 4 and carbon number 5 are the same positions, and that goes for the opposite ring as well. और उन्होंने आपसे बोला है कि आपको वन नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है, तो अगर वन नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज ओनली अ मिक्सचर ऑफ अ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो इट मींस कि वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कि या तो आप इस पोजीशन पे लगा दें, या फिर आप इस पोजीशन पे लगा दें, इसके अलावा कोई और पोजीशन अवेलेबल नहीं है। ये बात सबको समझ में आ रही है? इफ एनीबडी हैव एनी डाउट काइंडली आस्क। जी, सबको क्लियर है? सर एक दफा रिपीट कर दें। देखें, दो पॉसिबिलिटीज है ना नंबर असाइन करने की। इफ आई टेक this as a first carbon and this as a second carbon, then third, fourth, fifth, and sixth, right? जी, ये सिक्स पोजीशंस हो जाएंगी अब अर्श। यस सर। Okay. Other possibility is that this is going to be a carbon number one, this is going to be a carbon number two, then it must be a third, it must be a fourth, it must be a fifth, and it must be a sixth. Now is it clear? जी अर्श। यस सर। तो इट मींस मैं यहां से ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशंस एग्जैक्टली सेम पोजीशंस हैं, एंड दीज टू आर एग्जैक्टली सेम पोजीशंस। यस, इज इट क्लियर? यस सर। और यही सेम चीज अप्लाई होगी दूसरे कार्बन पे भी। सो मेरे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होंगी, के, और दोनों में एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ दिखाना है। सो वन इज दिस वन वेयर द NO2 इज ओवर हेयर, या तो मैं यहाँ पे लगाऊं, और अगर मैं इसकी जगह यहाँ नीचे इधर भी लगा दूं तो वो वही बात है। ये बात समझ में आ रही है सबको? एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी, that the NO2 group is bonded over here, और मैं ये यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं तो भी एक ही बात है, और अगर मैं अपोजिट रिंग पे लगाऊं तो भी इट गोज द सेम। जी, क्लियर है सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। Naphthalene can be oxidized under certain conditions to phthalic anhydride, and here we have the formula of phthalic anhydride. And naphthalene, what is the formula of naphthalene? If you recall, it is C10H8 and it is provided over here. See, so naphthalene can be oxidized under certain conditions to phthalic anhydride.
carbon dioxide and water. So we are getting three products. Now that what they are saying, construct an equation for this reaction. Use atomic O to represent an atom of oxygen from the oxidizing agent. So we don't need to show the whole oxidizing agent. Instead of whole oxidizing agent, we have to show that atomic O. So let's start. It's C10H8 reacting with atomic oxygen forming C8H4O3 along with the carbon dioxide and water. So if I start balancing this equation, you see here we have a 10 carbons and here I have only 9 carbons. So what I'll do, I'll put a 2 over here to balance the carbons. ये बात clear है सबको? Now, if you see, we have 8 hydrogens over here, and we have a 4 hydrogen over here and 2 hydrogen over here, which makes only 6 hydrogens on the product side. So I will put a 2 over here, which makes 8 hydrogens over here as well. Is it clear? Now we have balanced the hydrogens and carbons on both sides. Now have a look at the oxygen. I have 3 oxygen over here, 4 oxygen over here, and 2 oxygen over here. So if you add them up, what you will get 7 and 8, 9 oxygens. So you have to put 9 over here to balance this. Now your equation is balanced. Is this clear to everyone? Yes. If anybody have any doubt in balancing or in making the equation, kindly ask. Okay. Then let's move to the C part. The indicator phenolphthalein can be synthesized from phthalic anhydride and phenol. So it means these two are the reactants and this is the product under certain conditions. Here you go. If you see, the reaction is with the 2 moles of phenol reacting with a phthalic anhydride, forming a phenolphthalein along with the formation of water. So deduce the type of reaction shown by this equation. Yes, who can identify? Which reaction is this? Yes. Yes, who can tell me the answer? Which reaction is this? Okay, let me recall a statement. When a large molecule is formed by 2 or more molecules with the release of a small molecule like water or HCl is called? Yes, Musa. Hamna. Mubashir. Yes, can anybody recall this reaction where a bigger molecule is formed along with the release of a small molecule like water or HCl? Condensation reaction. Very good, Mubashir. Condensation reaction. You have studied condensation in your O levels or IGCSE or AS level as well. और A2 में भी रिव्यू किया है. तो जब भी एक बिगर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा हो स्मॉलर मॉलिक्यूल से along with the release of a water or HCl, then it's always a condensation reaction. Is it clear? Okay. D part. Name the functional groups in addition to benzene ring present in phenolphthalein molecule. Okay. So they have told us that there is a benzene ring.
So except benzene ring, we have to identify the other functional groups. Yes. Can anybody tell me which functional groups present in this phenolphthalein molecule? Okay, let me help you. Which functional group is this? And the other functional group? Alcohol Yes. and ester. Phenol and carboxylic acid. Where is carboxylic acid? Who is saying carboxylic acid? It's an ester. For carboxylic acid, the C double bond, that this O must be bonded to H, then it's a carboxylic acid. And हम ना correct your mistake as well. ये normally एक mistake हो जाती है जो students करते हैं. OH is bonded to a benzene ring, so we call it phenol. हम ऐसे OH को अल्कोहल नहीं कहते, हम ऐसे अल्कोहल OH को फिनोल कहते हैं. Okay, is this clear to everyone? So except benzene ring, we have phenol and ester. I don't think so. Then there is any other functional group. So there are three: benzene, ester, and phenol. Okay. Next part. Phenolphthalein reacts separately with the two reagents shown in the table. Complete the table by drawing the structure of the organic products formed. A part of the structure has been given for you, stating the type of the reaction. Okay, okay. So what I'll do, first I'll make the phenol over here, so you guys will understand that what is happening. And here I have a phenol. Okay. The phenol. So that was the structure of phenol, right? Here are actually position of OH. Okay, exactly on the fourth. So one OH is over here and one OH is over here. Now, they are saying that they are reacting with an excess of hot NaOH. So can anybody tell me the, okay, let me make it easier. We know there are three functional groups, which are, okay, which are benzene, phenol, and ester. Now I am adding NaOH excess. So do benzene react with NaOH? Yes. Do benzene reacts with NaOH? Okay. Let me make it over here. We are doing one reaction with NaOH and other reaction with bromine. So you all are done with organic. So can anybody tell me NaOH react with which functional group out of these three? Yes.
NaOH इन सब में से किस किस से रिएक्ट करेगा? Who can tell me? सर एस्टर और फिनॉल से रिएक्ट करेगा। वेरी गुड मुबश्शिर। एंड बेंजीन से नहीं करेगा। व्हाट अबाउट ब्रोमीन? यस, ब्रोमीन किससे रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन बेंजीन से रिएक्ट करेगा। बेंजीन से। वेरी गुड, बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड फिनोल और एस्टर से रिएक्ट नहीं करेगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। If you recall the structure or if you look at the structure over here we made for phenol, तो देखें जब NaOH से रिएक्शन होगा तो NaOH से रिएक्शन के रिजल्ट में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा and this carbon becomes an acid and this carbon becomes an alcohol, a hydrolysis of an ester. And as the we uses the basic medium, so instead of acid, that acid further reacts to give it salt. So if you look and if you have to draw this equation, what you will do? You will show a C double bond O that is bonded with the O negative ion and Na positive ion due to the hydrolysis, and the O over here bonds with the hydrogen to form alcohol. Okay, so which reaction is this? And where there is a phenol are on these two position, and phenol are also acidic in nature, so they also reacts with sodium hydroxide forming, displacing the hydrogens from there. So So this is acid base reaction. this is acid base reaction, but what about this? Yes, these are the products of the acid base reaction, but what about this one? Basic hydrolysis. Hydrolysis, or you can say alkaline or basic hydrolysis. But for the type of reaction, it is enough to write hydrolysis. If they ask about the, you know, uh, medium, then we share that it's a basic or alkaline. जी, ये पार्ट सबको क्लियर है? जी। Now have a look over here. हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेस ऑफ एक्वस ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं. So let me recall, aqueous bromine gets substituted on the benzene ring with a phenol, but not with an ester. So here, in this case, this part of the structure remains intact. सही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा. But what will happen? Here there is a no change over here. ये दोनों OH as it is OH रहेंगे, but OH की प्रेजेंस में 2, 4 और 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है. 6 positions are already occupied of these two benzene ring, so we get a one bromine over here, one bromine over here, one bromine on this position, and one bromine on this position. Is this clear? And why we put so many bromine? Because they said that it's an excess of. If anybody have any confusion, kindly ask. And which reaction is this? ब्रोमिनेशन। नहीं, Bromination is the, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। yeah, very good. It's a electrophilic substitution. जी, ये पार्ट सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए.
Are these reactions are clear to everyone? Yes, sir. Okay. Okay. Now, next part. Phenolphthalein is an indicator and is represented by a formula HIN. Phenolphthalein HIN is a weak acid. Okay, and here you have a dissociation equation for a weak acid. The Ka value for phenolphthalein is 5.0 exponent minus 10 mole per dm cube at 298 Kelvin. This indicator changes color at a pH of approximately 8.8. Calculate the ratio of the salt is to acid at pH 8.8. Yes, who can solve this part? We are given with the pH, okay, and we know that pH is equals to minus log 10 times concentration of hydrogen ions. And if I have to find the hydrogen ions, it would be 10 exponent minus pH. So 10 minus raised to the power minus 8.8. Can anybody tell me the value that the concentration of hydrogen ion is equals to? 1.58 times 10 negative 9. 1.58. Okay. Are you getting the three figures only? Yes. 1.584. Four figures. And if it's 584, then 1.58 is fine. Okay. So we got the concentration of hydrogen ions. Okay. If you look at this expression, and we know it's a equilibrium over here, so I can write its, and it's a weak acid, so I can write its uh, acid dissociation constant expression that must be equal to concentration of hydrogen ions times concentration of ion negative ions divided by concentration of undissociated acid molecules. ये बात सबको क्लियर है? Now if you see, we have this value over here and we have this value over here. So if I put these two values, 5.0 exponent minus 10 is equals to 1.58 exponent minus 9 times concentration of ion negative ions divided by concentration of undissociated acid, right? So यही रेशो था ना आपके पास यहाँ पे C. If I make this subject
So concentration of ion, negative ion divided by concentration of undissociated acid ion is equals to 5.0 exponent minus 10 over 1.58 exponent minus 9. Yes, can anybody tell me the answer? 0.316. 0.316. Is this numerical is understandable to everyone? Sir, from the UC equation, pH is pKa plus log concentration of ion over HIN. You are saying pH is equals to pKa plus log 10. We're asking about this equation, Hamna? Yes, sir. Okay. Can anybody tell me why we use this equation over here? Yes, who can answer this? It's for buffer solution. Remember, it is always for buffer solution. So do we have a buffer over here? No, sir. No, that's fine. So do remember, this equation is for a buffer. Okay, when there is a buffer solution, then we use this equation, otherwise we can't. Okay. Yes, Okay, sir. next part. Methyl orange is another acid-base indicator. Its structure in aqueous solution at pH 4.4 is shown. Okay. So that structure is at pH 4.4 and it is also an indicator. On the structure of methyl orange, circle the bond or bonds that make this compound a dye. Yes, who can relate? This is a nitrogen double bond. Yeah, it's a nitrogen. Very good, Mariam. It's a nitrogen-nitrogen double bond. Because if you recall, we have studied azo-dyes in organic compound, where first phenylamine is converted into a diazonium ion, and then that diazonium ion further reacts with a phenol or other benzene compound to form a dye. And due to this nitrogen-nitrogen double bond or a nitrogen-nitrogen bridge between the two benzene rings make it a dye. Okay, next part. The color of this indicator changes between pH 3.2 to 4 and pH 4.4. Suggests the structure of methyl orange at pH 3.0. Assume that SO3 negative Na positive group is unreactive. Okay. So at pH 3.0, if they are asking, okay, now you have to figure out one more thing. See, they have given you the range that in which the indicator is changing its color. And that range is 3.2 to 4.4. Is this clear? अच्छा, now आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसा बनाना है? तो जो आपकी हायर रेंज है, हायर रेंज और उससे हायर पीएच वैल्यू पे आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर से जो कि 3.2 और उससे लोअर पीएच पर है उससे डिफरेंट होगा. ओके, और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होगा कि इस रीजन को, एक मिनट मैं ये यहाँ पे लिख देता हूं,
जो भी आपको कलर चेंज की रेंज दी जाएगी, उस कलर चेंज की रेंज में, फॉर एग्जाम्पल डेट इज द 14 एंड डेट इज अ pH 1। ओके, तो आपको जो रेंज दी जाएगी, आप उस रेंज से उसको, उसके मीडियम को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, वेदर यू कैन से, आप इसको इस तरह रिमाइंड कर लें कि जो आपकी लोअर रेंज है, इस रेंज में वो इंडिकेटर, दैट इंडिकेटर इज रिएक्टिंग विद एसिड, और 4.4 एंड अबव रेंज में इट इज रिएक्टिंग विद बेस। ठीक है, और ये इस इंडिकेटर के लिए ये रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिकेटर की रेंज, इफ द कलर चेंज रेंज इज प्रोवाइडेड लाइक दिस, इट इज 8.0 to 10, so it means कि at 8 or below 8 that indicator is reacting with acid, and when we move reaches to 10 and above 10, that indicator is reacting with alkali। ये बात समझ में आ रही है सबको? Is this point is clear to everyone? Yes. Okay, so if an indicator is reacting as an is reacting with an acid, then it the indicator itself is behaving as an alkali, the indicator itself is behaving as a base, and if it is behaving as a base, so what it will do, it will accept a proton, because that's what a base is. A base is a substance which accepts a proton, right? So if you see over here, it doesn't have any proton, but there are 3 nitrogens over here which have a lone pair. So below 3.2, you can show any of the hydrogen forming another bond with a hydrogen, any one of the nitrogen, sorry, out of these three, that can, that is, that forming a bond with a hydrogen to behave as a base। ठीक है, so we will repeat the same structure। अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आपने इसका बिहेवियर उसके कलर चेंज की रेंज से आइडेंटिफाई करना है। लोअर रेंज से बिलो ये एज एन एसिड बिहेव, सॉरी, एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा, और कलर चेंज की जो हायर रेंज है उससे अबव ये एज अ बेस, सॉरी, बेस से रिएक्ट कर रहा होगा। तो अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो अगर वो ये वाला नाइट्रोजन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आप यूं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, काइंडली आस्क। जी, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ, ओके, methyl orange can be synthesized as shown। Okay, in step 1 we are getting an R, then we are getting an S। Okay, we don't know what is R, we don't know what is S, and that S is reacting with another compound forming this। Deduce the identities of compounds R and S and draw the structure in the boxes। Okay, so if you look over here, okay, if we start from here, so we don't know right now what is R, but if we move to S, we still don't know what is S. But if we observe this reaction, that S is reacting with this, forming this, it will help me to identify S।
क्या होना चाहिए एस फिल बताएगा मुझे? व्हाट विल बी एन एस? अब्दुलरहमान कुरैशी। यस। देखें, ये जब भी ड्रेज होता है तो ये डायजोनियम आयन की वजह से होता है। और डायजोनियम आयन यानी कि एस मस्ट बी अ डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन पहले बनता है और डायजोनियम आयन ऐसा कंपाउंड फॉर्म करता है। सो इट मींस I can conclude over here that, and in diazonium ion there is a nitrogen nitrogen triple bond, and out of these two, one nitrogen is bonded with the benzene ring, and benzene ring have a this group. So that must be your S. And this diazonium ion is forming from R, which means R must be a phenylamine because diazonium ion is formed from phenylamine. So the whole structure remains as it was, except the nitrogen nitrogen triple bond. Now instead that we have a NH2 group, a phenylamine. जी, ये दोनों रिएक्ट स्ट्रक्चर्स क्लियर है सबको? Yes, is this reaction scheme is understandable to everyone? If anybody have any doubt or any confusion, kindly ask. I have shared Sir, how all did we the notes. identify Sorry, diazoniamine? How did we sorry. identify that S was diazoniamine? Okay. Let me tell you what you will do. Initially, I know that everyone faces some problems. So whenever these kind of reactions, you will observe what you will do. You have this diagram over here. See over here. That's it's a azo compound. You can keep this along when you are doing the organic reactions. I suggest all of you, I shared this whole A2 reaction file in the group. So see over here that if you see this compound and this compound, aren't they same compounds? Except the substituents. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है और यहाँ पे SO3 वहां पे लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की जगह here you are getting something else और यहाँ पे something else. बट अगर आप देखें तो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, राइट? सॉरी, हियर इट इज। ठीक है, तो ये देख लें, इट इज, ये किससे फॉर्म हो रहा है? डायजोनियम आयन से फॉर्म हो रहा है। when the diazonium ion is reacting with the phenol, you are getting this compound. Yes, Hamna? Yes, sir. So if you look at this scheme, where the past paper is, okay, if you look at this scheme, see, instead of a phenol we have a this compound और यहाँ पे मुझे डायजोनियम मिल रहा है, राइट? सो Yes, sir. फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड, देखें ये नाइट्रोजन तो यहाँ पे भी है, बट दीज टू नाइट्रोजन्स आर मिसिंग ओवर हेयर। तो इसी बेसिस पे मैंने कंक्लूड किया कि ये जो एस है डेट मस्ट बी अ डायजोनियम। क्योंकि देखें ये जो एजो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ डायजोनियम। ठीक है, इस डायजोनियम से ही देखें ना ये एजो कंपाउंड बन रहा है। जी, ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। तो इसी बेसिस पे मैंने क्या किया,
what I did, I made a diazonium ion, a nitrogen nitrogen ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर जो पूरा इसका है वही मैंने रिपीट कर दिया, आई डिडंट डू नथिंग एल्स, बस मैंने वो बॉन्ड खत्म करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, एंड द होल थिंग इज सेम। यस, and the one thing that I have to put a positive charge over here. Is this clear? Yes, sir. जी, बाकी सबको भी क्लियर है। अब देखें, ये आर से बना है, तो आपको नहीं पता अभी, या आपको रिएक्शंस याद नहीं है कि आर क्या है, तो कम ओवर हियर। देखें, ये यहाँ पे किससे फॉर्म हो रहा है, अगर आप देखें तो ये बेसिकली इससे फॉर्म हुआ ना, ये इसमें चेंज हुआ। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. So it means what I will do over here, I will make it NH2 that is bonded to a benzene, और बाकी यहाँ पे SO3Na लगा हुआ है, तो मैं SO3Na को एज इट इज लगा रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि आप देखें तो ये हमारे स्टार्टिंग में इसमें भी ये बना हुआ था। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अब अगर आप चेंज देखें, इफ यू मार्क द चेंजेस, सी ओवर हियर, NO2 changes to NH2, and that NH2 is changes to N3 positive, right? Now, what they are saying, suggest the reagent and conditions for step 1 and step 2. If you see step 1, NO2 is converting into NH2. आपको reagent याद नहीं है, come over here. Here you are getting the reagent, C. NO2 is converting into NH2. What you need? What you need? Tin, concentrated hydrochloric acid, and heat. And which kind of reaction is it? It's a reduction reaction. समझ में आ रही है सबको बात? So reagent is tin and concentrated hydrochloric acid and heat. Now, if you look at step 2, NH2 is converting into nitrogen-nitrogen triple bond. So again, you can take the help from over here. So see what we are using. We are using NaNO2. We are using HCl, and the temperature must be below 10 degrees Celsius. So you will write over here. So initially, I tell you, if you try to memorize all the reagent and conditions and then start doing past paper, it will be always be difficult for you. So I suggest, instead of memorizing initially the reagents and all the conditions, keep these reactions in front of you while doing the past papers. ठीक है, पास पेपर्स करते हुए आप इनको सामने रख के करते रहे तो होपफुली कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होगा ढूंढना, मगर वो आपका ब्रेन स्टॉर्म होता रहेगा, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, if anybody have any doubt, kindly ask. Okay. Define the term partition coefficient. So, partition coefficient, it is the ratio of the concentration of solute in the two immiscible solvents at equilibrium.
when the equilibrium is established and that solute is distributed into immiscible solvents due to its solubility in both of the solvents. So that the ratio at that moment when the equilibrium is established, that ratio of the solute is called partition coefficient. Okay, I am keeping the class over here till today. Tomorrow, inshallah, we will continue at the same time at 12:10. Okay, so we will continue from here in the next class tomorrow, inshallah. Okay, take care, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. इस कंजर की वजह से ना